गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडर सी केबल्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है अपनी इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ को जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहा है, तो न्यू केबल लैंडिंग सिस्टम जो है उसे अपनाने पड़ रहे हैं। तो लेटेस्ट जो है एयरटेल का टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम जो है कि मेटा ने बैक किया है, वो 100 टेराबिट्स पर सेकेंड ऑफ कैपेसिटी इंडिया के इंटरनेट बैंडविड्थ में ऐड करेगा। तो अंडर सी केबल जो है वो बैकबोन होती हैं ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी की। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को क्रॉस कंट्रीज़ लिंक करती है। ये केबल्स जो हैं जस्ट फ्यू इंचेस थिक होती हैं, बट बहुत ही हैविली प्रोटेक्टेड होती हैं ताकि ये हार्श सी इन्वायरमेंट्स को सर्वाइव कर सके। अब इनके अंदर जो है फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड्स होते हैं जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एट हाई स्पीड्स कैरी करते हैं। अंडर सी केबल्स जो है वो डेजिग्नेटेड लैंडिंग पॉइंट्स पर ऊपर भी आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग स्टेशंस होते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं उनको मेजर नेटवर्क्स के साथ। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंडर सी केबल्स जो हैं वो 90% ऑफ ग्लोबल डेटा, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, $10 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और सिक्योर गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हैंडल करती हैं। तो मॉडर्न केबल्स हमें सेवरल 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड ऑफ कैपेसिटी देती हैं और थाउजेंड्स ऑफ टेलीकॉम यूज़र्स को सर्व करती हैं। एक बार जब लैंड पे आ जाती हैं तो अंडर सी केबल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से लिंक होती हैं, जो कि वेब है लेस विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे टावर्स और केबल्स। और इंडिया के दो मेजर अंडर सी केबल लैंडिंग हब्स हैं, चेन्नई और मुंबई। मुंबई लगभग 95% ऑफ सब सी केबल ट्रैफिक को इंडिया में हैंडल करता है, एक 6 किलोमीटर स्ट्रेच वर्सोवा में। और 17 इंटरनेशनल केबल सिस्टम्स करंटली इंडिया में के नीचे से जाती हैं, मतलब इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में से जाती हैं। और इंडिया के अपनी दो डोमेस्टिक केबल प्रोजेक्ट्स भी हैं, एक तो है चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड्स और कोची लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट। ओके, तो अंडर सी केबल प्रोजेक्ट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं इन्हें प्लान और एग्जीक्यूट करने में। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। इंडिया सिर्फ अभी 1% ऑफ ग्लोबल केबल लैंडिंग स्टेशंस होल्ड करता है और 3% ऑफ सब सी केबल सिस्टम्स को। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि फ्यूचर शॉर्टफॉल्स हो सकती हैं, क्योंकि डेटा यूसेज इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली डिपेंडेंट है अंडर सी केबल्स पर। अगर कोई भी डिस्क्रप्शन आती है क्रिटिकल एरियाज़ में जैसे रेड सी में, तो उससे 25% तक इंडिया का इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो है वो हार्म हो सकता है। 2024 में ऐसा हुआ भी था, सब सी केबल कट्स हुए थे बाबल मंडैप स्ट्रेट में, लेकिन उससे कुछ टेम्प्रेरी इश्यूज़ आए थे, लेकिन इंडिया को सिग्निफिकेंट उससे हार्म नहीं हुआ था। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर लार्ज स्केल डैमेज हो जाता है मल्टीपल केबल्स का इस रीजन में, तो सिग्निफिकेंट इंटरनेट आउटेजेस हो सकते हैं इंडिया में भी। सबसी केबल्स जो हैं वो ट्रेडिशनली शिपिंग ट्रेड राउट्स को ही फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पर फिर शिप्स के थ्रू इन केबल्स को ले डाउन करना इजी हो जाता है। कंपनीज़ जो हैं वो डिले फेस करती हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि कंपनीज़ जो हैं वो डिले फेस करती हैं, क्योंकि बहुत सारी परमिशंस रिक्वायर होती है अंडर सी केबल्स या सब सी केबल्स डालने के लिए। लगभग 51 डिफरेंट अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है। तो सिंप्लीफाई करना, स्ट्रीमलाइन करना इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस को बहुत ज़रूरी है हमें इन डिलेज़ को कम करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ईज़ ऑफ लेइंग सब सी केबल्स। और सबसी केबल्स सिक्योर करना एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है। बेटर सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स होने चाहिए। ठीक है, इंडिया करंटली डिपेंड करता है फॉरेन रिपेयर वेसल्स पर फिक्स करने के लिए डैमेज्ड सबसी केबल्स को, जिसमें कि लॉन्ग अप्रूवल प्रोसेस भी लगता है। तो इंडिया को एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी सबसी केबल रिपेयर वेसल्स में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी थाईलैंड में लैंड हुए हैं अभी, आपको पता है, 6th बिम्स्टेक समिट के लिए। तो ड्यूरिंग दिस समिट पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि जो बायलैटरल टाइज़ हैं थाईलैंड के साथ वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लेवल पर पहुंचेंगे। तो इससे जो है डीप टाइज़ होंगे हमारे सिक्योरिटी, ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन में। तो लीडर्स ने एग्री किया है कि एक स्ट्रेटजिक डायलॉग भी बनाया जाएगा सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बीच में, और इन्हेंस्ड मैरीटाइम और डिफेंस कोऑपरेशन भी किया जाएगा। तो इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया है एशियन सेंट्रलिटी और यूनिटी में। पीएम मोदी ने अंडरलाइन किया है एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड पैसिफिक इंडो पैसिफिक। पीएम मोदी ने अपनी कमिटमेंट भी दिखाई है बिम्स्टेक को भी, और स्ट्रेस किया है कि बिम्स्टेक का रोल है बूस्ट करने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड में। तो थाईलैंड के पीएम ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड तिपिताका, जो कि एक तरह से शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को दिखाता है, वो गिफ्ट किया है। इंडिया और थाईलैंड दोनों के बीच में शेयर्ड सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं, जो हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजन में रूटेड है।
बुद्धिज़्म जो ओरिजिनेट हुआ इंडिया से, वो एक की स्पिरिचुअल बॉन्ड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और एंशिएंट लिंकेजेस भी हैं थ्रू मैरीटाइम ट्रेड राउट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस, जैसे कि अडेप्टेशन ऑफ रामायण इन थाई फोकलोर एज रामाकियन। इंडियन इन्फ्लुएंस विजिबल है थाई आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल मेडिसिन और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी। तो रिलेशनशिप जो है वो 1990 से लुक ईस्ट पॉलिसी से जो है वो मोमेंटम गेन कर चुका है, और अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी कन्वर्ट हो चुकी है। थाईलैंड भी जो है वो एक्ट वेस्ट पॉलिसी अपनी दिखा रहा है साउथ एशिया की तरफ। तो हम क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं एशियान में, बिम्स्टेक में, एडीएमएम प्लस में, ईस्ट एशिया समिट में। इंडिया और थाईलैंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर्स भी हैं। थाईलैंड 21st लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। थाईलैंड जो है इंडिया का रीजनल ट्रेड एम्बिशंस जो है एशियान और बिम्स्टेक के थ्रू भी जो है वो पूरे करता है। इंडियन कम्युनिटी लगभग 2.5 लाख के आसपास है थाईलैंड में, और वो प्राइमरली ट्रेड, ज्वेलरी बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी और वेरियस अदर सेक्टर्स में काम करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट का यूज़ करते हुए एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक न्यू वार्म जुपिटर एक्सो प्लानट डिस्कवर किया है, जो कि लगभग 1000 लाइट ईयर्स अवे है। तो टेस एक नासा का मिशन है जो कि लॉन्च किया गया था मार्च 2018 में। स्मॉल स्पेस टेलीस्कोप है जो डिज़ाइन किया गया है डिस्कवर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ एक्सो प्लैनेट्स को इन ऑर्बिट अराउंड दी ब्राइटेस्ट ड्वार्फ स्टार्स इन स्काई। ये एक फॉलोअप है नासा के हाईली सक्सेसफुल केपलर स्पेस टेलीस्कोप का, और इसके अपने प्राइम मिशन के टाइम पर 2 ईयर सर्वे किया गया था सोलर नेबरहुड का। टेस्ट ने मॉनिटर किए लगभग जो है वो जो टेस्ट ने मॉनिटर किए ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स पीरियोडिक ड्रॉप्स में, जो कि प्लैनेट के ट्रांजिट से होते हैं। प्राइम मिशन इसका जुलाई 2020 में एंड हो चुका है, लेकिन अभी एक्सटेंडेड मिशन पर है, और 75% ऑफ द स्टारी स्काई अपने प्राइमरी मिशन में कवर कर चुका है या इमेज कर चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट ने जो अभी रिसेंटली टैरिफ इम्पोज किए हैं उसमें 10% टैरिफ जो है हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड्स पे भी लगा दिए हैं, जबकि वहाँ पर तो वो आइलैंड्स ही अनइनहेबिटेड है, तो ऑफकोर्स कोई एक्सपोर्ट्स ही नहीं हो सकता यूएस को वहाँ से। तो हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड्स रिमोट सब अंटार्कटिक वॉल्केनिक आइलैंड ग्रुप है, सदर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड। वन ऑफ ऑस्ट्रेलिया 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज़ हैं, और ये गवर्नड है डायरेक्टली बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ये आइलैंड वॉल्केनिक है ओरिजिन में, और ये ओनली वॉल्केनिकली एक्टिव सब अंटार्कटिक आइलैंड्स हैं। पार्ट हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ये सपोर्ट करते हैं लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ मरीन बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग पेंगुइन्स, एलिफेंट, सील्स एंड सी बर्ड्स। और ये आइलैंड जो है फ्री ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़ भी हैं, तो इसलिए ये आइडियल है बायोडाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कन्ना दिपाया। ये टॉपिक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। तो कन्ना दिपाया एक ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है केरला का, और उसको जीआई टैग मिला है। तो ये वूव किया जाता है रीड बॉम्बूस सॉफ्ट इनर लेयर्स का यूज़ करते हुए, जिससे कि रिमार्केबल इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। वार्मथ देता है विंटर में, कूलिंग इफेक्ट देता है समर में। प्राइमरली इसको ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही जो है वो क्राफ्ट करती हैं। पहला ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है केरला से जिसको एक जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीवीड। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सीवीड फार्मिंग जो है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन गेन कर रही है एज अ सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। इवन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी एम है कि इंडिया की सीवीड प्रोडक्शन को 1.12 मिलियन टन्स ओवर 5 ईयर्स जो है वो बढ़ा दिया जाए। $5.6 बिलियन की ग्लोबल सीवीड इंडस्ट्री है, वो ग्लोबली एक्सपैंड भी कर रही है। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन भी तेज़ी से उसमें बढ़ रहा है। तो सीवीड क्या होते हैं? एक मरीन प्लांट जो ग्रो करते हैं ओशंस और सीज़ में। न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इसमें 54 ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। ये कैंसर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब को कॉम्बैट करने में काम आते हैं। और इनको कोई भी सीवीड को कोई भी लैंड, फ्रेश वाटर, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिसोर्स है। लार्ज सीवीड जो हैं वो डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, सीवीड जो है ऑक्सीजन जनरेशन में भी काम करते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिफिशियल रेन्स। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने रिसेंटली एक मीटिंग चेयर की है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ आर्टिफिशियल रेन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए थ्रू क्लाउड सीडिंग। तो आर्टिफिशियल रेन प्रोसेस है इंड्यूस करने का प्रेसिपिटेशन थ्रू क्लाउड सीडिंग। प्राइमरली ये यूज़ होता है
रेनफॉल एनहेंस करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए ड्रॉट कंडीशंस और रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन। तो कैसे काम करता है ये मेथड? जो है डिस्पर्स करता है केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, और उसको क्लाउड्स में कन्वर्ट करता है ताकि फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स हो। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ये सब किया जाता है। केमिकल जो है वो न्यूक्लिया की तरह काम करते हैं अराउंड वाटर वेपर, और फिर कंडेंस हो जाते हैं और लार्ज ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। सक्सेस ऑफ क्लाउड सीडिंग डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ सफिशेंट मॉइस्चर पर और अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर। तो दो तरह के होते हैं क्लाउड सीडिंग: हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, जो एक्सेलरेट करता है मर्जिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स इन लिक्विड क्लाउड्स; ग्लेसियोजेनिक क्लाउड सीडिंग, जो आइस फॉर्मिंग एजेंट्स इंट्रोड्यूस करता है सुपर कूल्ड क्लाउड्स में, ताकि जो वाटर वेपर है वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो और फिर वो मेल्ट होकर रेन में कन्वर्ट हो जाए। तो ज़रूरी है क्या कि क्लाउड सीडिंग ही हमें करना है? उसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जैसे स्टैटिक आर्टिफिशियल रेन इंड्यूसिंग सिस्टम, जिसमें नेचुरल आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है प्रेसिपिटेशन करने के लिए। फिर स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन बहुत ही फेमस है। सोलर जियो इंजीनियरिंग, जिसमें एरोसोल्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ताकि प्लैनेट को कूल किया जा सके और स्मॉग को रिड्यूस किया जा सके। फिर है डायमंड डस्ट एक्सपेरिमेंट। अगर आपको सल्फर बेस्ड एरोसोल्स भी नहीं यूज़ करने हैं तो डायमंड डस्ट को एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव, बट इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is importance of undersea cables. This topic is important for your economy section. So India is expanding its international internet bandwidth with new cable landing systems, and the latest is Airtel's 2 Africa Pearl system, which is backed by Meta, and it will add 100 terabits per second of capacity. Okay, so undersea cables are the backbone of global internet connectivity, and they link internet service providers with telecom providers across the countries, enabling fast and reliable data transmission worldwide. So these cables are just a few inches thick, but they are heavily protected to survive harsh sea environments. So inside, they contain fiber optic strands which carry vast amounts of data at high speeds. So undersea cables come ashore at designated landing points, typically manholes, which are buried under the sand. From there, they connect to landing stations inland, where they integrate with major networks. According to experts, undersea cables handle about 90% of global data, 80% of world trade, $10 trillion of financial transaction, and secure government communications. So modern cables offer several hundred gigabits per second of capacity, serving thousands of telecom users. Once on land, undersea cables link to terrestrial networks, which is a web of less visible infrastructure like towers and cables, and they deliver internet to homes and businesses. So India has two major undersea cable landing hubs, Chennai and Mumbai. Mumbai handles about 95% of subsea cable traffic, mostly through a 6-kilometer stretch in Versova. 17 international cable systems currently land in India. India also has its two domestic cable projects. First is the Chennai Andaman Nicobar Island project, then we have Kochi Lakshadweep Island project. Undersea cable projects are capital intensive and time consuming, which take months or years to plan and execute and cost millions of dollars. India holds only 1% of global cable landing stations and 3% of subsea cable systems. However, experts are warning that it could be that there could be future shortfalls because of rapidly rising data usage. So, what are the risks surrounding the undersea cable deployment in India? India's internet infrastructure is highly dependent on undersea cables, but any disruption in critical areas like the Red Sea could bring down in 25% of India's internet connectivity. In 2024, subsea cable cuts in Bab el Mandeb Strait caused such temporary issues. These cuts did not significantly destabilize India's internet due to excess capacity in other networks, but a larger disruption could have a severe impact. Large scale damage to multiple cables in the region could cause a significant internet outages with limited ability to reroute data. Subsea cables have traditionally followed shipping trade routes, as these routes made it easier to lay down cables. Okay, so what are the measures to strengthen India's subsea cable infrastructure? Companies face delays due to excessive permissions required for landing subsea cables in India. Currently, about 51 different approvals are needed. Simplifying and streamlining these regulatory procedures would reduce delays.
and improve the ease of laying subsea cables. Securing subsea cables is a significant concern, so better security measures and monitoring systems are needed to be implemented to protect these critical infrastructures from physical damage. India also currently dependent upon foreign repair vessels for fixing the damaged subsea cables, which involves long approval processes. So there is a need for increased domestic investment in subsea cable repair vessels and cable storage depots. Okay. So the next topic is India-Thailand strategic partnership. This topic is important for your international relations. So PM Modi has landed in Thailand on a two-day visit to attend the 6th BIMSTEC summit. During his two-day visit to Thailand, PM Modi announced the elevation of bilateral ties to a strategic partnership. This development signifies a deepening of ties in security, trade, and regional cooperation in the Indo-Pacific. The leaders also agreed to establish a strategic dialogue between security agencies of both nations, signaling enhanced maritime and defense cooperation. Reaffirming India's support for Asian centrality and unity, PM Modi underlined the vision of a free, open, inclusive, and rules based Indo Pacific. PM Modi also reiterated India's commitment to the BIMSTEC and he stressed BIMSTEC's roles in boosting regional connectivity and trade as well. So, in a powerful gesture of soft diplomacy, Thailand gifted PM Modi with World Tipitaka, which symbolizes shared Buddhist heritage of these two countries. India and Thailand both share civilizational ties which are rooted in history, culture, and religion. Buddhism, which originated in India, remains a key spiritual bond between the two sides. Um, Apart from that, we have seen adaptation of Ramayana in Thai folklore as Ramakien. Indian influence is visible in Thai architecture, language, traditional medicine, and performing arts. The relationship between the two sides gained momentum after India launched its Look East policy, which later evolved into Act East policy under PM Modi. Thailand, in turn, has embraced its Act West policy for this engagement with South Asia. So both sides are collaborating closely in regional forums like ASEAN, BIMSTEC, ADMM Plus, and East Asia Summit. India and Thailand both are important economic partners within Southeast Asia. Thailand was 21st largest trading partner of India, and about $15 billion of trade happens between the two sides. Thailand is part of India's regional trade ambitions through ASEAN and BIMSTEC as well. Indian community in Thailand is estimated at about 250,000, and they are primarily engaged in trade, jewelry business, hospitality, and various other service sectors. Okay. So the next topic is transiting exoplanet survey satellite. This topic is important for your science and tech section. Using the transiting exoplanet survey satellite, an international team of astronomers have recently detected a new warm Jupiter exoplanet, which is located more than 1,000 light years away. So TESS is a NASA mission which was launched in 2018. It was designed to cover or discover thousands of exoplanets in orbit around the brightest dwarf skies dwarf stars in the sky. So it's a follow-up to NASA's highly successful Kepler Space Telescope, and in its prime mission, the 2-year survey of the solar neighborhood, TESS monitored the brightest of stars for periodic drops caused by planet transits. Its prime mission ended in July 2020, but still it is in an extended mission. TESS finished its primary mission by imaging about 75% of the starry sky. Okay. So the next topic is Heard and McDonald Islands. This topic is important for your international relations. So US President has imposed a 10% tariff on imports from the Heard and McDonald Islands, despite the fact that island has no known export to the US, and it is and these are the uninhabited islands. Heard and McDonald Islands are a remote subantarctic volcanic island group located in southern Indian Ocean. They are one of Australia's 7 external territories and are governed directly by the Australian government. The islands are volcanic in origin. They are the only volcanically active sub-Antarctic islands, and they are part of UNESCO World Heritage Site also. They support large populations of marine birds and mammals, including penguins, elephant seals, and seabirds. And these islands are free of invasive species also, which makes them ideal for biodiversity and evolutionary studies. So the next topic is Kanna Dipaya. This topic is important for our economy section. So Kanna Dipaya, which is a traditional tribal handicraft from Kerala, has been awarded the GI tag. So Kanna Dipaya
originates from its distinct reflective design, and it is woven using reed bamboo's soft inner layers, which gives it remarkable thermal properties by providing warmth in winter and cooling effect in summer. It is primarily crafted by tribal communities, and Kannadipaya is the first tribal handicraft from Kerala to receive a GI tag. So the next topic is seaweed. This topic is important for your environment section. Seaweed farming is gaining global recognition as a sustainable and profitable industry. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana aims to boost India's seaweed production to 1.12 million tons over 5 years. And $5.6 billion global seaweed industry is also expanding rapidly, with India's contribution increasing steadily. What is seaweed? Seaweed is a marine plant which grows in oceans and seas. It is nutrient dense, containing 54 trace elements, vitamins, minerals, and amino acids. It helps combat cancer, diabetes, arthritis, heart disease, high blood pressure, while also boosting immunity. Unlike traditional crops, seaweed does not require land, fresh water, fertilizers, or pesticides, making it an eco-friendly and sustainable agricultural resource. Large seaweeds like giant kelp also create dense underwater forests, which serve as biodiversity hotspots, offering shelter and food to a variety of species. Seaweeds also contribute to oxygen generation and carbon sequestration, playing a significant role in climate regulation. So the next topic is artificial rains. This topic is important for your environment section. Delhi Environment Minister has recently chaired a meeting with key government agencies to explore the feasibility of artificial rain through cloud seeding. Artificial rain refers to the process of inducing precipitation through cloud seeding, which is a weather modification technique. It is primarily used to enhance rainfall, combat drought conditions, and reduce air pollution. How does it work? It involves dispersing chemicals using aircraft or helicopters like silver iodide, potassium iodide, dry ice into clouds so as to encourage the formation of raindrops. These chemicals act as nuclei around the water vapor, which then condenses to form large droplets, eventually leading to rainfall. The success of cloud seeding depends on the presence of sufficient moisture and appropriate atmospheric conditions. So, what are the types of cloud seeding? First is the hygroscopic cloud seeding, which accelerates the merging of droplets in liquid clouds, making them large enough to fall as rain. Then we have glaciogenic cloud seeding, which introduces ice forming agents into supercooled clouds, converting water vapor into ice crystals, which then melt into rain. What are the alternative technologies? We have, if not cloud seeding, of course, we have static artificial rain inducing system also, which uses natural ionization technology to stimulate precipitation. We also have stratospheric aerosol injection, which is a very famous technique. It's a form of solar geoengineering, where aerosols like sulfur dioxide or other reflective particles are injected into the atmosphere to cool the planet and reduce smog. It is kind of inspired by volcanic eruptions. Then another alternative is the diamond dust experiment, which uses the diamond dust as a non-toxic, long-lasting alternative to sulfur-based aerosols for climate cooling. But of course, the high cost makes it unfeasible. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.